चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? वी आर स्टार्टिंग कंपोनेंट्स ऑफ मॉडल ड्रिवन एप्स। एंड ये यार बहुत ही ज़्यादा लाइक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि यार मॉडल ड्रिवन एप्स जो हैं इसमें हमें जो है प्रेजेंटेटिव व्यू हमें जो है वो मिलेगा। ठीक है, ओके। क्या मिलेगा देखने के लिए? हमें इसमें देखने को मिलेगा एक इम्पॉर्टेंट व्यू जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंटेटिव व्यू। ठीक है, ओके। तो इसीलिए ये जो है यार इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए इसकी कहानी को शुरुआत करते हैं। ठीक है, ओके। वॉइस कमिंग लो। ओके, ओके, जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक आई हैव माय माइक हियर। आई एम मेकिंग just the frequency I have check। बेटा माइक तो यहाँ नहीं है। हेलो, हेलो, ओके। वॉइस कमिंग। Okay. Yeah, mic is here. Mic is here. I'll check once. Okay. If the voice is coming low, then there is just no point in recording. Okay. Just a second. ओके, हेलो। चलो कंटिन्यू करते हैं। आई बिलीव अब वॉइस आ रही होगी सभी को। ठीक है, ओके। चलिए। So component of model-driven apps. A well-designed model-driven app consists of several components that you select to build the appearance and functionality of the finished app. Okay? Okay. Model-driven apps consist of several components. Just a second. Several components that you select to build appearance and functionality of finished app. The components and component properties that make users to create component and component property that makers use एग्जैक्टली क्या है कंपोनेंट एंड उसकी प्रॉपर्टी उसको मेकर्स यूज करते हैं फॉर व्हाट दे यूज to create an app becoming apps metadata. To understand these components relates to app design, we can categorize them as data, user, interface, UI, object, and visualization components. Now the data components. Components to define what data is used to build the app. Within the environment, you can design data components either at table level or within a solution. ठीक है, आई होप ये सभी को समझ आया होगा। चलिए आगे को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ओके। जस्ट a second, I'll scroll down. Now this is I believe is okay. Now this is what? Now this is एक टेबल दी हुई है यहाँ पे जिसमें कंपोनेंट्स बताए हुए हैं। टेबल का डिस्क्रिप्शन है एंड वी हैव द डिजाइनर।
मतलब कौन सा हम डिजाइन सेगमेंट पावर एप्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डैशबोर्ड के अंदर डिजाइन सेगमेंट्स होते हैं, तो कौन से डिजाइन सेगमेंट को हम यूज करेंगे वो डिटेल में यार इस टेबल के अंदर बताया हुआ है, दैट आई विल बी डिस्क्राइबिंग। एंड इसके बाद हम यार आगे बढ़ रहे होंगे। तो वी हैव द टेबल, द कॉलम, एंड देन वी हैव for the relationships inside the table, then you the choice column. Okay. Here we do not count the rows. Here we do not count the rows. That is one of the main point to be noted. Okay. And then what is the description of it? What are the designers we use? That is thing you have to study on your own in this table. Okay. Okay. Or you want me to brief it for you? You want me to brief it for you? Okay. बेसिकली टेबल में क्या क्या आता है, कॉलम में क्या क्या आता है, ये दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और डिजाइनर में हम कौन सा सेगमेंट यूज करेंगे वो दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं। ठीक है। ओके। तो आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है। ओके। एंड इसका मेरे पास डायरेक्ट पीडीएफ एक्सट्रैक्टेड है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे एज अ पीडीएफ मैंने डाला है वन नोट के अंदर। तो सेंडिंग द नोट विल बी 1 minute टास्क फॉर मी। ओके। I will check my visibility once, because if I'm visible properly, then I think that will be not an issue in explaining the things. Okay. Yeah, yeah. I'm visible properly. Okay. ये कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो फिर से कंपोनेंट्स के लिए एक टेबल आती है। कंपोनेंट्स में भी कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट होता है ऐप। देन ऐप के अंदर क्या आता है, साइट मैप के अंदर क्या आता है, फॉर्म के अंदर क्या आता है, व्यू के अंदर क्या आता है, कस्टम पेज के अंदर क्या आता है, जनरेटिव पेज के अंदर क्या आता है। ठीक है, वो सब दिया हुआ। एंड उसका भी डिस्क्रिप्शन है कि उसके अंदर क्या क्या आता है, एंड डिजाइनर हम कौन सा सेगमेंट यूज करेंगे। ठीक है। फिर लॉजिक कंपोनेंट्स, उसके लिए भी टेबल दिया हुआ है कि कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक होते हैं, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड डिजाइनर सेगमेंट किया हुआ है। ठीक है। विजुअलाइजेशन के लिए भी सेम पोर्शन किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ अटैच कर दूंगा, देख सकते हो। एंड देन फाइनली जो है ये सब का मिला के जब का डैशबोर्ड के अंदर आपका डिजाइन रेडी हो जाता है, तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट में आप पे दे सकते हो। आई मीन देख सकते हो, मैं आपको पीडीएफ अटैच कर दूंगा। ठीक है। ओके। Now next is design model driven apps. Now wait for a few minutes, we will continue. Okay everyone, let's continue. तो अब हम स्टडी करने वाले हैं अपना मॉडल ड्रिवन एप्स। ठीक है। ओके। but that we will discuss, I think it's best if we discuss that in the next lecture. Okay, because नेक्स्ट लेक्चर में इसीलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है टेक्स्ट फॉर्मेट लिस्ट है। देन यहाँ पे जो है ओके इमेज भी एडेड है। ओके, तो ये थोड़ा सा करेंटली जो है ये थोड़ा सा लोडेड है नहीं, एंड ये टेक्स्ट फॉर्मेट में पेस्टेड है, तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे बेटा लग सकता है। दैट इज व्हाई मैं इसको जो है सेटअप करके रखूंगा, एंड देन विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। बट इस लेक्चर के लिए ये वाला जो पीडीएफ है ये मैं ऐड कर दे रहा हूँ, दिस विल बी द नोट्स। एंड नेक्स्ट लेक्चर में एडिशनली हम और क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, शेयर करिए। यस, आई थिंक सभी को फुल स्क्रीन दिख रहा होगा। इनिशियली मैंने फुल स्क्रीन शेयर नहीं किया था बिकॉज आई वांटेड दैट टू बी अ सरप्राइज फॉर यू कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है और भी क्या डिस्कस करने वाले हैं। दैट मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करने वाले हैं कि जस्ट अ सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड।
Oh, PDF ganga. That PDF. Okay, I think I have shared that in group. Okay, just a second. Yes. Okay. Yes. Just a second, beta. Okay. Yes, I have saved it. I've shared that in group also. But this segment of the notes and discussion, I am planning only to release on the website. Okay. So if I release a lecture tomorrow, then don't get surprised because that will only be on a website discussing this. Okay. So that I'll plan and execute. Okay. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कुछ बेसिक्स थिंग्स हैं एंड ये और भी आते रहेंगे. ओके. So that I'll plan and release on the website itself. Okay. So और भी कंटेंट के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. ठीक है. ओके. या फिर पहले नेक्स्ट लेक्चर से क्या करूँगा, पहले एच डी के बेसिक्स कर लेंगे थोड़ा सा. देखते हैं, प्लान इट आउट एंड आई लेट यू नो. ओके. ठीक है. चलिए. Thank you everyone. Thank you for joining this class. Please like this video, share it with your friends, and do subscribe to the channel Digitech Education. Thanks for watching.